મહેમાનશ્રી અને આચાર્યશ્રીઓને વિનંતી કરીશ કે પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશે. હવે રાજેશભાઈને વિનંતી મહેમાનને ધ્વજવંદન માટે આમંત્રિત કરશે. Viశ్రామ్ స్కాట్ సగన్ స్కాట్ విశ్రామ్ స్కాట్ సగన్ स्कॉट विश्राम स्कॉट सावधान एक साथ वंदे मातरम शुरू करेंगे. शुरू कर. वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा सदा शक्ति सरसाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला वीरों को हर्षाने वाला
પહેલા આપણા શાળાના ટ્રસ્ટી શ્રી ચૌધરી સાહેબને કહીશ કે પ્રસંગને અનુરૂપ પોતાના બે બોલ બોલી લે. ભારત માતા કી જય! ભારત માતા કી જય! આજના આ 75માં સ્વાતંત્ર્ય દિન પર્વ નિમિત્તે અહીં આપણે ધ્વજવંદનનો જે કાર્યક્રમ રાખ્યો. જનરલી આપણે બે રાષ્ટ્રીય તહેવારો ઉજવતા હોઈએ વર્ષ દરમિયાન. ખબર છે કે એક 15મી ઓગસ્ટ અને બીજો 26મી જાન્યુઆરી. મજા આવે, બે દિવસ રજા હોય. રજા હોય ને, રજા હોય તો મજા આવે. હવે આપણે કોઈ પણ તહેવાર હોય, રાષ્ટ્રીય તહેવાર હોય કે ધાર્મિક તહેવાર હોય, તો એ દરેકનું મહત્વ હોય. એ બધાને એમ થાય કે આપણે આ રાષ્ટ્રીય તહેવાર તો બે વખત કેમ ઉજવતા હોઈએ? આ 15મી ઓગસ્ટ અને 26મી જાન્યુઆરી. તો અહીંયા જે 15મી ઓગસ્ટ એ દિવસે જે ખબર ને, એ દિવસે આપણે આઝાદ થયા. હવે આઝાદ થવા આમાં કે માનો કે બીજી વસ્તુ કે કોઈ પણ આપણે મકાનમાંથી કોઈને કાઢી મૂકવા અને પછી એ મકાનમાં આપણે રહેવા જવું અને આપણી સત્તાની જે એને ચાલુ કરવું, આ બેમાં જે ડિફરન્સ છે ને એ પ્રમાણે. કારણ કે પેલા કાઢી મૂકી તરત જ આપણે પેલું નહીં કરી. એટલે જ્યારે પણ 15મી ઓગસ્ટ 1947 આપણે આઝાદ થયા, એટલે અંગ્રેજો અહીંથી ટોટલી આપણને કહી દીધું કે હવે આ જે ઇન્ડિયા કરો એ તમને સોંપી. અને 26મી જાન્યુઆરી એ દિવસે આપણને આપણું જે બંધારણ હતું એ નક્કી થયું અને આપણા જે નિયમોને પ્રમાણે આ દેશ આપણો ચાલુ થયો. આ મિત્રો તમારે બધાએ માનો કે દેશ માટે આપણે શું કરવું પડે? હમણાં બેને બહુ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા. એમાં આદિ રોટી ખાવાની વાત આવી, હિન્દુસ્તાન અમારા. હવે આ બધામાં આપણને જે ક્ષેત્રમાં જે કામ, માનો કે તમે વિદ્યાર્થી છો તો તમારું શું કામ? ભણવાનું પહેલા, કારણ કે ભણીને પ્રગતિ કરી શકે. એટલે તમારે તમારું કામ ખૂબ નિષ્ઠાપૂર્વક કરો તો ઇનડાયરેક્ટ તમે દેશનું કામ કરો. શિક્ષકોનું કામ સરસ રીતે ભણાવવાનું. એ રીતે દરેકને જે કામ નક્કી કર્યું એ બધાએ આપણે નિષ્ઠાપૂર્વક કરીશું તો આપમેળે આપણો દેશ મહાન બનવાનો છે. અસ્તુ. બાળકોના પ્રોગ્રામને નિહાળીશું. ધોરણ 10 ગુજરાતી માધ્યમ નિમાળા આચાર્ય પ્રિયંકા પોતાનું ગીત લઈને આવે છે, એ મેરે વતન કે લોગો. અત્રે ઉપસ્થિત મહેમાન શ્રી, ટ્રસ્ટી શ્રી, આચાર્ય શ્રી, શિક્ષકગણ તથા મારી સાથે અભ્યાસ કરતા વાલા ભાઈ બહેનો, આજ 15મી ઓગસ્ટ દિન હું તમારી સમક્ષ જે ગીત રજૂ કરું તે તમે શાંતિથી સાંભળો તેવી મારી નમ્ર વિનંતી. मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनके
जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों, वो झेल रहे थे गोली। ये धन्य जवानों अपने, थी धन्य ये उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी। सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से रत पथकाया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा। फिर सो गए प्राण गवा के, जब अंत समय यादो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना। વર્લ્ડ કાઉન્ટી વાળા સિંગ સુરુજી પોતાની સ્પીચ લઈને આવે છે. Respected Trustee Sir, Chief Guest, Principal Man Sir, and all my teachers and my friends, good morning and happy Independence Day to all. I am Singh Suruchi from grade 9 and I want to dedicate a speech on Independence Day. It is a bright morning with a feeling of patriotism in everybody's heart. But about 74 years ago, India was not an independent country. It was under the rule of British government. Indians were tortured, captured and were forced to be slaves. The anger inside the Indians led to the emergence of our freedom fighters, who felt the need to enlighten Indians about India's condition. They engaged Indians in various freedom movements and struggles to gain the victory of freedom. The freedom fighters like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel did a lot of freedom movement to gain the independence. This day is a memorable one by giving us remember us of
of nationalism. So we have to maintain our unity to make our country strong. Finally, on 15th August, we got our independence from the hands of Britishers. At last, I want to say something. आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची है जो एक बूंद भी लहू की, बची है जो बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। ખૂબ જ સરસ, ખૂબ જ સરસ. હવે ધોરણ 9 ગુજરાતી માધ્યમના બાળકો એક નાટક લઈને આવે છે. મૌર્ય આદર્શ, પ્રજાપતિ હર્ષિલ, પંચાલ યશ, પંચાલ ભાવેશ, ચૌહાણ ધ્રુવ, પટેલ શિવ, પ્રજાપતિ માન. અરે યાર, આજે તો કેમ ખૂબ જ મજા આવી. હા યાર, મારી પાસે પણ એક નવું હથિયાર છે, તે ખૂબ જ સરસ છે. હું પણ હતો ગેમમાં, પણ જેવો આગળ વધવા ગયો ત્યાં જ ગેમ ઓવર થઈ ગઈ. અરે યાર, તારું મોઢું કેમ ઉતરેલું છે? કઈ નહીં યાર, પૈસા લીધા હતા ગેમમાં નવા સાધનો ખરીદવા અને ગેમ અપડેટ કરવા માટે. પૈસા કમાઈ ગયા પણ કોઈ અપડેટ ના થયું. હા યાર, હમણાંથી ઓનલાઈન ફ્રોડ તો ખૂબ જ વધી રહ્યું છે. ઓનલાઈન ખરીદી કરીએ કે પછી કઈ વસ્તુ મંગાવીએ અને બેંકમાંથી આપણી સિર્ફ પૂછપરછ માટે ફોન આવે અને આપણી પાસેથી બધી માહિતી મેળવીને બેંકનું ખાતું ખાલી કરી નાખે છે. મને તો ચિંતા થાય છે, પૈસા કપાઈ ગયા છે. પપ્પાને ખબર પડી તો હું તો ગયો. અરે યાર, તું ચિંતા ના કરે, બધું જ સારું થઈ જશે. તું તારા પપ્પાને સાચું સાચું કહી દે, એ તને કઈ નહીં કરે. સારું, તો કાલે આપણે પછી સ્કૂલમાં મળીએ. વિદ્યાર્થીઓ ગેમ રમ્યા પણ એમને કંઈક પ્રોબ્લેમ થયો કે ભાઈ બોલતા પણ ખચકાય કે ભાઈ આવો પ્રોબ્લેમ થયો, પણ જ્યારે વાલી પોતાનો એકાઉન્ટ જોડે ત્યારે ખબર પડે કે ભાઈ મારા છોકરાએ આવો કંઈક પરાક્રમ કર્યું છે, બરાબર. અને આવો કોઈ પરાક્રમ કરે એટલે વાલીઓ આપણા શું કરે, ભાઈ અમને ઠપકો આપે કે મારે કે એવું કંઈક કરે છે, બરાબર. પણ જ્યારે તેઓ સ્કૂલમાં આવે છે ત્યારે તેમને કંઈક સમજાવવામાં આવે છે ટીચર્સ દ્વારા કે ભાઈ આપણે પર્યાવરણને કેવી રીતે બગાડીએ છીએ, કયા કયા પ્રશ્નો છે, એ પ્રશ્નો આપણે જ્યાં હવે સ્કૂલના દ્રશ્યમાં જોઈશું. કેમ ભાઈ, પૈસા કપાયા હતા તો ઘરે કીધું કે નહીં? હા યાર, કાલે તું ખૂબ જ ઉદાસ હતો. તું કહે તો ખરી, શું થયું? શું કીધું તારા પપ્પાએ? મેં કાલે રાત્રે પપ્પા જોડે વાત કરી કે મેં ગેમમાં નવા સાધનો ખરીદવા અને ગેમ અપડેટ કરવા માટે તેમાં પૈસા લીધા હતા. પૈસા કમાઈ ગયા પણ કોઈ અપડેટ ના થયું. તો મારા પપ્પાએ કીધું કે મને ખબર હતી જ્યાર સુધી તારા જોડે આવું કંઈ નહીં થશે ત્યાર સુધી તું નહીં સુધરીશ. ગેમ વાળવાથી આપણા ભવિષ્ય અંધકારમય થાય છે, બાકી ગેમ વાળાઓનું. એ લોકો તો પૈસા કમાય છે, આપણું કામ છે અભ્યાસ કરવાનું. પપ્પાની વાત સાંભળે પછી મારું તો એક જ લક્ષ્ય છે, બસ અભ્યાસ કરવાનો. ગુડ મોર્નિંગ મેમ. ગુડ મોર્નિંગ, સિટ ડાઉન. થેન્ક યુ મેમ. તો વિદ્યાર્થીઓ, આજે આપણે જ્યાં રહીએ છીએ આજે આપણે તેના વિશેનો અભ્યાસ કરવાનો છે. તો કહો, આપણે લોકો ક્યાં રહીએ છીએ? ઘરમાં. ના, સોસાયટીમાં. અરે રે, આપણે લોકો પૃથ્વી પર રહીએ છીએ. આપણે પૃથ્વી પાસેથી મેળવેલ કુદરતી સંસાધનોને પ્રદૂષિત કર્યા છે. મેડમ, પણ અમે તો કઈ પ્રદૂષિત નથી કર્યું. કર્યું છે. જ્યારે તમે બસ કે ટ્રેનમાંથી મુસાફરી કરો છો ત્યારે નાસ્તો કરીને કચરો ક્યાં ફેંકો છો? બસ કે અંદર કે આજુબાજુ બહાર. તો પછી કર્યું ને પ્રદૂષણ. તો મેડમ, બીજી કઈ રીતે પ્રદૂષણ થાય છે? આપણે હવાનું, જળનું અને વાયુનું પ્રદૂષણ કરીએ છીએ. મેડમ, પ્રદૂષણથી શી અસર થાય છે?
પ્રદૂષણથી પૃથ્વી પર વાતાવરણમાં ગરમી વધી ગઈ છે, વરસાદ અનિયમિત થઈ ગયો છે, પાકની ઉત્પાદકતા ઘટી ગઈ છે, જેથી માનવીના સ્વાસ્થ્ય પર અસર થઈ રહી છે અને લોકો બીમાર પડી રહ્યા છે. મેડમ, આનો શું ઉપાય છે? હવાનું પ્રદૂષણ ઓછું કરવા માટે આપણે પુનઃપ્રાપ્ય સ્ત્રોતોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. પુનઃપ્રાપ્ય એટલે શું? પુનઃપ્રાપ્ય એટલે સૂર્ય ઉર્જા, પવન ઉર્જા, ધરતી ઉર્જા વગેરે. તો મેડમ, આ સિવાય કોઈ બીજો ઉપાય? હા, છે ને. આપણે દરેકે વૃક્ષો વાવવા જોઈએ, જેથી પૃથ્વી પર વાતાવરણનું તાપમાન જળવાઈ રહે છે અને ઓક્સિજનનું પ્રમાણ વધે છે. મેમ, વધુ વૃક્ષો કેવી રીતે વાવી શકાય? વધુ વૃક્ષો વાવવા માટે આપણે લોકો જ્યાં રહીએ છીએ ત્યાં આજુબાજુમાં રહેલી ખાલી જગ્યામાં આપણે વૃક્ષો વાવવા જોઈએ. મેડમ, વૃક્ષો તો સરકાર વાવે છે ને? હા, વૃક્ષો સરકાર જરૂર વાવે છે, પરંતુ તેનું જતન થવું પણ જરૂરી છે, તો જ તે છોડ મોટું બનીને વૃક્ષ બનશે. હા મેડમ, હું પણ મારા જન્મદિવસ પર એક વૃક્ષ વાવી તેનું જતન કરીશ. સરસ. આમ જો દરેક વ્યક્તિ વૃક્ષ વાવશે તો આપણે કુદરતને કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરી શકીશું. થેન્ક યુ. આઝાદી મિક્સ ગીત ડાન્સ સાથે લઈને આવે છે ધોરણ 9 ની બાળાઓ શર્મા રિયા અને ધોરણ 11 સાયન્સની વિદ્યાર્થીની શર્મા અંજલિ. जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। है हिंदुस्तानी, है हिंदुस्तानी, है हिंदुस्तानी, है
हिंदुस्तानी मेरे रंग दे मेरे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरे रंग दे बसंती चोला रंग दे बसंती चोला माए रंग दे तुझे सलाम अम्मा तुझे सलाम आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला झंडा ऊंचा रहे हमारा चले विश्व तिरंगा प्यारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं सकी ये गुलसिता हमारा सारे जहां से अच्छा ધોરણ 9 અંગ્રેજી માધ્યમ દેશભક્તિનું નાટક લઈને આવે છે ધોરણ 9ના અંગ્રેજી માધ્યમના બાળકો. ए निक्का भारत माता की तुम्हारी कोई अपनी इच्छा इच्छा तो मेरी कल भी वही थी और आज भी वही है कि मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश के काम आए. गुरु तुम्हारी कोई अपनी इच्छा है? मेरी तो एक इच्छा थी कि एक बार चैन की सो सकूं. इससे सौभाग्य की बात क्या होगी कि अपने देश के लिए सदा के चैन की सोने जा रहा हूं. सुखदेव तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तीनों साथियों को एक बार गले मिलने दिया जाए. हाँ खोल दिए जाए इनके. टूट जाए ये घरौंदार कुछ कम नहीं. मुझे अपना प्यारा वतन चाहिए. मैं जीऊं तो तिरंगे के लिए जीऊं मरूं तो तिरंगा का कफन चाहिए. कहीं सूख न जाए आजादी का पौधा. इसलिए अपने खून से करते हैं. ए मेरे वतन अब हमको आखिरी सफर करते हैं. ए निकलो जिंदाबाद. ए निकलो जिंदाबाद. भारत माता की जय. काम डाउन. आजादी को पूरे 75 साल हो गए, फिर भी क्या हम आजाद हैं? आज अगर हम आजादी की बात करते हैं तो क्या है ये आजादी? क्या वो आजादी जिसमें अमीरों ने पैसे अपने घर पर लिए और एक गरीब भूखा असहाय एक एक रोटी का मोहताज है? क्या वो आजादी जिसमें हर रोज लाखों किसान कर्ज से दबकर आत्महत्याएं कर रहे हैं? क्या वो आजादी? आइए इसे गरीब किसान के नजरिए से ही देखते हैं. क्या हुआ भाई? भाई सारी फसल बर्बाद हो गया. अभी तो मेरी बेटी की शादी की बात है. यहाँ तो कुछ सरदारों के कुछ अधिकारों के जो रोटी के न तो रोटी के. रोटी तो बहुत दूर की बात है भैया. यहाँ तो दादी नसीब नहीं होती, संतन नहीं होती, माँ भी नसीब नहीं होती. कैसे रहते थे भैया, कैसे रहते हो? हमारा देश तो आजाद हो गया है, गरीब गरीब किसान अभी भी गरीब है. आजादी को इतने वर्ष हो गए, फिर भी एक गरीब की दुर्दशा ऐसी ही बनी हुई. ये नजर डालते हैं आज की राजनीति पर और जानते हैं कि आज के राजनेताओं ने हमारे उन शहीदों और महापुरुषों का नया भारत बनाने में अपनी कितनी भूमिका निभाई है. और ठीक ही कहा है कि कत्ल, रिश्वत और हत्या हर रोज जहाँ का धंधा हो वह देश तरक्की के लिए करता जहाँ का राजनेता अंधा. हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता जरा कैसा हो? नमस्ते भाइयों बहनों, नमस्ते. बैठ जाइए तुम लोग, बैठ जाइए.
जनरेटर लगाओ। इस बार हमारी पार्टी ने छात्रों में शौचालय दिए, नारे दिए, फिर भी विपक्ष पार्टी कह रही हमने कुछ किया नहीं है, सब कुछ चलता है। अरे हनुमान जी बोलिए शादी चीज के दिखा देंगे। इस बार हमारी पार्टी ने बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को शिक्षा दी। अरे अभी तुम जाओ, अभी हमारे नेताजी भाषण दे रहे हैं। इस बार हमारी पार्टी ने गांव में विदेशों जैसी सड़कें बनाई, यहाँ गाड़ी दस से आती है और बस मिलकर जाती है। अंगूठा दिखाओ, सीधे इसी में वोट दीजिएगा। देखा आपने आज के राजनेताओं ने अपनी कैसी भूमिका निभाई है हमारे उन शहीदों और महापुरुषों का नया भारत बनाने में। आइए ये देश की इन समस्याओं पर एक आम आदमी क्या विचार करता है उसी से जानते हैं। ना कुछ हाल वतन में मरने वालों का, वतन को डसने वाले ही आज वतन में राज कर बैठे हैं। मेरे देश, मेरे समाज में ऐसी घटनाएं और दृश्य देखकर मेरा मन द्रवित हो जाता है। मैं सोचता हूँ उन लाखों शहीदों और जवानों का और महापुरुषों का जिनके सपनों पर पानी फिर जाता है। कुछ नहीं हो सकता इस देश का, कुछ नहीं हो सकता। चारों तरफ से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार और नकारात्मकता ही नकारात्मकता है। कुछ नहीं हो सकता इस देश का, कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है मित्र, जहाँ एक तरफ समस्याएं और नकारात्मकता विद्यमान है वहीं दूसरी तरफ इसके समाधान भी उपलब्ध है। मैं आपसे बस एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस करोड़पति युग के साथ अपने आप को बदलने की हिम्मत रखते हैं? और अगर आपका उत्तर हाँ है तो आपके कल की सफलता, आज की जीत और आने वाले कल की कामयाबी के पीछे बस एक ही मुकाम है और वो है परिवर्तन। परिवर्तन पहले सोच में और फिर अमल में। देशभक्ति से डंडा नहीं बल्कि इस प्रयास में है कि हम अपने देश को सत्यम और मजबूत बनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कुशवाहा अर्पिता, अहिरवल डिंपल, पटेल ऋषि, गोटिया कृष्णा, मिश्रा अंजलि, शर्मा रिया। वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। छने से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम दिल के घर सुना सुना है। मैं गया जहाँ थी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको करती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यारी माँ मुझे सलाम, पाछा ले लिया। मुझे सलाम। अब तो हमें आगे बढ़ के रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। Oh,
मिला ले, तेरे रंग तो खिला खिला ले, और मोहित रंग बसंती, आना मोहित रंग बसंती, झुकी तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया, झुकी तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, ધોરણ 10ની ગુજરાતી માધ્યમની વિદ્યાર્થીની પ્રજાપતિ માધવી પોતાની સ્પીચ આપશે। दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को, जिससे तेरी शान है, जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। गुड मॉर्निंग। नाउ उपस्थित सभी अतिथिगण, ट्रस्टी श्री, आचार्य श्री, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं माधवी आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम लोग भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। जिस दिन सन 1947 में एक पूरे उपमहाद्वीप के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ, हमें विदेशी लोगों से आजादी मिली। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। हमारे महान नेताओं के अनगिनत संघर्ष, अनमोल बलिदान और प्रयास है। इसी की बदौलत भारत आज दुनिया का एक मजबूत, आजाद और शक्तिशाली देश है। आजादी में कभी दान नहीं हो सकता, वह एक उपहार नहीं हो सकता। हम सलामी देते हैं उन नेताओं, योद्धाओं और महान स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने हमें प्रिय और आजाद देने के लिए अपना उल्लेखनीय कार्य किया। इतिहास महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और अन्य सैकड़ों स्वतंत्रता के प्रेमियों जैसे महान नेताओं के संघर्ष और बलिदान के परमाणु से भरा हुआ है। महात्मा गांधी जी शांति के प्रस्तावक थे। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय में भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया और अंग्रेजों से पीड़ित होते हुए कभी हार नहीं मानी। यह उनका आकर्षक व्यक्तित्व था जो उनके ध्वस्त लाखों भारतीय लोगों को उनके पीछे ले गया। वे दुनिया के महानतम नेताओं में से एक थे। आज हमारे देश भारत में इस दुनिया की हर खूबसूरत चीज मौजूद है। हमारे पास मजबूत कृषि की और पानी की व्यवस्था है। हमारे सशस्त्र बल बहुत ही बहादुर और निर्भय है। वह इस भूमि के लिए अपने जीवन का बलिदान देने में भी कभी हिचकिचाते नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत है और इसी के साथ हम स्वतंत्र और खुशहाल लोगों के साथ इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हमारी युवा प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा में पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह दिन हर साल इस देश को किए हुए हमारे वादों को याद दिलाने के लिए आता है। हमें विदेशी लोगों से तो आजादी मिली है, लेकिन आज भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हमारे कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें अपने देश की प्रगति और कल्याण के लिए दिन रात कार्य करना होगा। जल्द ही
वह दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होगा। अंत में दो पंक्तियां कहते हुए मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे ये तिरंगा हर जगह, हम लहराएंगे ये तिरंगा हर जगह। नशा ये हिंदुस्तान की शान का है, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। जय हिंद जय भारत। ગુજરાતી માધ્યમ અને અંગ્રેજી માધ્યમની બાળાઓ ગીત લઈને આવે છે તેરી મિટ્ટી में मिल जावा। ભરવાડ મમતા, કલસારા રિયા, ડામોર સુરભી, ડાંગે અંકિતા, સિંહ સુરુચિ, તલવાડી ગરિમા। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वापस जा न सका वो बदनामे मेरे बदनामे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बढ़के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
પ્રોગ્રામની સમાપ્તિ થાય. That's caught in the crossfire.